So what I was saying is that we'll discuss about technical analysis, the foundation of technical analysis. We are not going to discuss advanced technical analysis in this session, because I get a lot of feedback and requests from participants that they are not aware of the advanced things that we discuss. So it is important to know the basics first before directly jumping onto the advanced things. Then we'll discuss about stock selection. How do you select a stock? At what level you buy a stock? At what level you should do profit booking or stop loss? At exit levels, of course, and how basically that will help you to do the portfolio management for stocks in particular. Then we'll discuss about some online tools which you can use. And then, of course, I will take question and answer. Okay. In between, if you have any points, comments, please feel free to put it in the chat box. So as I mentioned earlier, there are two branches of study in trading and investment. One is fundamental analysis, second is technical analysis. So in fundamental analysis, we basically study, I mean, as the name suggests, the fundamentals of a company. When I say fundamentals, what is the revenue flow of the company? What is the cash flow of the company? Is the company making profits year on year? How is their business model? How is the business environment? So on and so forth. So basically, most of the things related to the revenue and the business model of a company. Now, fundamental analysis is something that you do for selection of a stock. I mean, if you want to, let's say, buy some stock or explore some stock, it is very important to do the fundamental analysis of a particular stock particularly. But then for most of the names which we know as brands, let's say a Maruti Suzuki or a HDFC or a ICICI Bank or a TCS or an Infosys. I mean, mostly these are fundamentally good stocks. You don't really have to bother too much about their fundamentals. Now, let's say you understand that an Infosys is a good stock, or a TCS is a good stock, or a Maruti Suzuki or a Tata Motors is a good stock. Then question comes, okay, the stock is good, but what about the price? Are you entering at the right price? So that is where technical analysis comes into picture. So fundamental analysis is something that you do once and you don't have to do it again and again. Technical analysis is something that you have to do regularly. When I say regularly, it can be daily, quarterly, weekly, depends on your trading and investing style. We'll talk about that more. So as I mentioned, technical analysis is a form of security analysis that uses price, data, and volume, typically displayed graphically in charts. So we can do technical analysis using charts. We'll talk about charts in detail. The whole purpose of today's session is that after the session, you will be able to do chart reading yourself to a good extent. And using the charts and after doing the chart reading, one can analyze the price levels, at what price one should buy a particular stock, at what price one should do profit booking, so on and so forth. So, big difference between fundamental and a technical analysis. The major thing is, as I said, fundamental analysis you don't have to do again and again. The fundamentals of a company, the fundamentals of an Infosys or a TCS or a HDFC are not going to change every week. Maybe you will have to, or you should study the fundamentals once in 3-4 months or once in 5-6 months. But technical analysis is something that you will have to do regularly, maybe on a daily basis, weekly basis, monthly basis, depends on your style of investment again. And technical analysis is useful for all type of people. When I say all type of people, all type of traders and investors, whether you are a short-term trader, whether you are a positional trader, whether you are investor, for everybody, technical analysis is very useful. Okay. So between fundamental analysis and technical analysis, I personally give more weightage. 80%, 90% of your work can be done through technical analysis. So what does technical analysis help us to achieve? Okay.
So determine support and resistance levels for buying and selling at the best prices. So once you identify a stock, let's stick to example of TCS. Let's say you identify that okay, TCS is a good stock and I want to trade and invest in TCS, Tata Consultancy Services. So you will have to understand what are the support levels. Support level means a level below which price may not go or is not expected to go. Let's say currently the price of TCS is around 4,300. So whether it will go below 4,300, whether it will go to 4,200, 4,000. So that you will be able to understand, identify using the technical analysis. Similarly, on the other side, resistance. How how much more the price can grow from let's say 4,300, whether it will go to 4,500, 5,000, 5,500. So what will be the resistance level? Okay, so that is the concept of support and resistance. Okay, so we can basically try to understand how the support and resistance levels for a particular stock. Determine the trend of a stock, whether a stock is in uptrend or downtrend. So if a stock is in uptrend, you should hold that stock and maximize your profit. If there is a situation wherein the downtrend is there in a particular stock, then ideally you should exit that stock and maybe you can re-enter the particular stock once the uptrend again starts. Okay. Determine whether a stock is overbought or oversold. Now, what is this concept? Overbought means the price is very inflated, highly inflated. The stock is overpriced, and probably it is time to exit the stock ideally. And oversold is the price has bottomed out. There's a lot of selling which has happened, and probably it's a good time to buy that particular stock. Momentum. When I say momentum, now some stocks they remain idle at a particular level or in a range, they just don't move. Okay, whereas certain stocks they have got a lot of movement. So it is always good from the trading point of view, especially if you are working in the momentum stocks. Determine breakouts and breakdowns. Now, this is a very important concept. Breakout means if a stock is going in a very good rally, if a very good rally is starting for a stock, then that is called as breakout. And a stock can give you a very good return in a very short span of time. Maybe 20%, 30%, 50% is possible in a week or couple of weeks. So that is called as breakout. So all traders normally are on the watch out for a breakout. Breakout मिल गया तो बढ़िया है. अगर आपने breakout में right level पे enter कर लिया, you will be able to make good money in a quick time. Similarly, breakdown. Breakdown means उसका मेजर सपोर्ट ब्रेक हो गया है. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल टीसीएस का मेजर सपोर्ट इज 4,200. अगर वो 4,200 ब्रेक होता है तो उसके बाद में बड़ा फॉल आएगा, देन इट कैन गो टू मे बी 3,600 और 3,300. जैसे आपको ब्रेकआउट में बड़ा प्रॉफिट होता है, वैसे ब्रेकडाउन में आपको मेजर लॉस हो सकता है अगर आपने टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो. ट्रेंड रिवर्सल, वेदर अ स्टॉक is entering from a bullish trend to bearish trend or vice versa from bearish to bullish. So all that is possible to understand through technical analysis. And last but not the least, minimize emotions. अभी बहुत बार क्या होता है कि लोग स्टॉक्स बाय करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है. ओके, या फिर कोई स्टॉक को अवॉइड कर दे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके, क्लासिक एग्जांपल इन द मार्केट इज एचडीएफसी. बहुत लोगों को लगता है कि नहीं एचडीएफसी स्टॉक बहुत अच्छा है. आई मीन इट्स अ कंपनी, एज अ कंपनी इट इज गुड. बट 3-4 साल में एज अ स्टॉक उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, आपको कितना भी अच्छा लगे. बट एट द एंड ऑफ द डे हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमको उसमें रिटर्न मिलनी चाहिए. अगर रिटर्न नहीं मिल रहे तो नॉट मच फन, राइट. तो आपका इमोशंस आप बाजू में रख के काम कर सकते हो इफ यू आर फोकसिंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस विल गिव यू अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर कि नहीं ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, इसमें हमको काम करना चाहिए, इसमें हमको काम नहीं करना चाहिए. सो दैट इज दैट ऑब्जेक्टिविटी यू गेट using technical analysis. Okay. So what are the different aspects of technical analysis? अभी हमने technical analysis के बारे में बहुत सारा बात किया है. But what are the components of technical analysis? So of course the base is graph or chart, the price patterns, then time frame, the time frame that you are using for your activity. Then there are various patterns. The basic pattern is candlestick, and then for candlestick itself there are different patterns. For charts there are different patterns. And then there are indicators. There are lag indicators, there are lead indicators. So these are the various things
which are there in technical analysis. And actually, to study all this, it's a long exercise. It will take couple of days to cover everything in detail. But आपको आज मैं इसका basic समझा दूँ so that you will get a flavor, you will get some idea about what all goes into technical analysis. Okay. Any question at this point? Hope everybody with me. Okay, good. So before we move, just wanted to give you some idea about RGS consulting services. So as I said, RGS is into wealth management and we have various wealth management services. So we have portfolio management or account handling services wherein we handle the client portfolios on a profit sharing basis. We have consulting services wherein we provide advisory or consulting services. Then there are fixed return services wherein we offer quarterly assured returns or annual assured returns depending upon the client requirement. So anybody of you, if you want more details about that, we can discuss in detail. One-on-one, please contact me. There is advanced training coming up, which will be a combination of technical analysis and derivative strategies. Combination of technical analysis plus derivative strategies. अभी आज के सेशन में आप बेसिक्स सीखोगे फॉर टेक्निकल एनालिसिस विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दी एडवांस सेशन. तो ये पुणे में एडवांस सेशन है ऑन 20th October 10:30 AM to 1:30 at MCCI on SB Road. So here you will get in-depth knowledge about in-depth information about some useful technical analysis strategies and derivative strategies. Okay. So definitely think about joining this particular session if you are seriously doing trading and investing. So these are some of the details that we are going to cover in the session, which is going to be there on 20th of October. Okay, so let's come back to our discussion. So TA concepts. Okay, so the TA technical analysis starts with something called as candlestick. Now here our learning for today starts. Okay, so TradingView is the website that we use for technical analysis. I mean, there are a lot of websites which are available in the market. This is something that I personally use and prefer. Okay. So let's go to TCS. As I said, we'll focus upon our discussion on TCS. Okay, now so please pay clear attention here because now we are going to start the actual learning. So this is what you are seeing right now. For those of you who are seeing it for the first time, this is the chart. Okay, the chart created by the price pattern of TCS. Okay, now what you are seeing here. This is the chart of TCS. Okay, and this is the chart created by the price movements of TCS. I mean, the very basic thing that I'm telling you. Now, all the patterns that you can see here, these red patterns or columns, these are called as candles. Okay, in technical analysis, these are called as candles. And the study of the candles is basically what is the foundation of technical analysis. Okay. If you go to this particular slide here, anatomy of a candlestick. Okay. So I'll show it to you on the chart also. So basically a red candle means a candle which gets formed when the particular stock is down for that particular time frame. High is the highest price achieved by that stock on that particular day. Open is the opening price on that particular day. Close is the closing price on that particular day. And low is the lowest price on that particular day. So this is for the red candle. Okay.
For the green candle, it is slightly different. Your opening price here is at the bottom. Here for the red candle, the close price is replacing the opening price. Whereas here the close price is replacing the opening price, and then you have the high price. So let us look at it on the study it on the chart. So this is the 1 day candle of TCS, okay, 11th October, that is last Friday. Now this is a green candle. What it means? Now the opening price for this particular candle was 4143, which means the day start for the stock was 4143. The highest during the course of the day was 4241. Now why it is shown as a green candle? Then the low was 4112, highest was 4241, low was 4112, and the close was 4149. I think I should give you another candle example so that it will be simple. Let us look at this particular candle of 14th of August. Now this is a green candle. Okay, and the opening price was 4209. So this is the opening price you can see here on the right hand side. On the right hand side of the screen, you can see 4208. So that is the opening price level. Close price was 4295. So this is the close price 4295. Highest was 4306 and lowest was 4188. Okay. So this is how you determine the opening price, high price, low price, and closing price for a particular candle. So this is 1 day candle for TCS, the moment of price for TCS on 14th of August. This is a green candle. This is a green candle because the closing price is higher than the closing price of the previous day. Previous day का जो closing price था that was 4196. Here the closing price is 4295. Okay. So this is the very basic about the candlestick. अभी यहाँ पे आपको ऊपर दो छोटा सा एक लाइन दिखेगा. ये जो लाइन दिख रहा है इसको कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज विक, WICK विक. ओके, एंड दिस शेडेड पोर्शन इज द बॉडी ऑफ द कैंडल. ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या इंफॉर्मेशन है, इसका क्या यूज है, इज इट रियली रेलेवेंट? बट प्रॉपर अगर आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करना है तो दिस इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. So we looked at the anatomy of the candlestick, how a candlestick is formed. Now there are different type of candlesticks. Okay, so various shapes are formed depending upon the price pattern, and the shapes give us idea or shapes give us indication as to what we can expect in the coming days. So these are spinning top candles. Now spinning top typically means that it is an indecision candle. Okay, market is unsure whether to go higher or lower. So here you cannot make a decision whether the stock will go higher or lower. शूटिंग स्टार इज अ बेरिश कैंडल. अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो नॉर्मली जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो रेड रहेगा, वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा. हैमर इज अ बुलिश कैंडल. ओके, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ बुलिश पैटर्न, एंड नॉर्मली जब ये पैटर्न फॉर्म होता है then you can expect the price to go higher on the next day or in the next session. Doji is again an indecision candle. Then this is called as bullish engulfing candle. Now this is a very interesting and useful candlestick pattern. बुलिश एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है वो पिछले दिन के रेड कैंडल से बड़ा है. ओके, इट इज एनगल्फिंग द बॉडी ऑफ द अर्लियर रेड कैंडल. So it clearly shows that there is a good buying momentum and the stock is expected to go higher. Then similarly there is bearish engulfing candle. Then there are some more patterns here. You will find it little complicated. So let me go to the chart and I will give you example of some of these candles. So let's look at spinning top.
So you can see here 13 September 6 and 16 September. These two are spinning top candles. Spinning top का मतलब ये है कि as I told you earlier, it is not clear whether the market is going to go higher or lower. Okay, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसोलिडेशन फेज एंड द मार्केट वाज नॉट श्योर कि भाई ऊपर जाना है नीचे जाना है. बट ये दो कैंडल के बाद में तीसरा कैंडल था, यहाँ पे भी ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ. बट अभी ये तीन रेड कैंडल फॉर्म हो गए तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है एंड देन यू गॉट अ बिग फॉल. ओके, so this is how the spinning top candles actually give you a indication about what you can expect further. Then let us look at shooting star. So this is a kind of shooting star example, and then there was a red candle the next day. This is a classic example of bearish engulfing candle. Okay, on 22nd of August, ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका जो बॉडी है, दैट इज द रीजन नाउ यू नीड टू नो बॉडी एंड द वीक एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये कैंडल का जो बॉडी है, इट इज कंप्लीटली एनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल. ओके, नाउ सिंस इट इज कंप्लीटली एनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल, इट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि नेक्स्ट कैंडल आपका रेडी होना चाहिए 99%. 100% तो नहीं बोल सकते, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज. बट वेन एवर देर इज अ एंगल्फिंग कैंडल, वेदर इट इज रेड और ग्रीन, अगर रेड कैंडल होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल रेड रहेगा, अगर ग्रीन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल आप ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. सो दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. एक ग्रीन कैंडल का बॉडी जो है, इस ग्रीन कैंडल के बॉडी ने इसको पूरा एंगल्फ कर दिया है. सो वी कुड सी अ बुलिश कंटिन्यूएशन एंड प्राइस ऊपर गया. ओके, so this is how the candlestick patterns actually give you an indication that what you can expect in the coming sessions. काफी ये इफेक्टिव होता है, यूजफुल होता है, but you should have an eye for it. Then these are these three soldiers and three crows. This pattern. अब ये थ्री सोल्जर्स का मतलब होता है कि ऐसे अगर तीन ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड चालू होता है. सिमिलरली अगर ऐसे थ्री रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं तो एक स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड चालू होता है. ओके, let's see if we have examples here on the chart. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीसीएस क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम है. आपको यहाँ पे सब पैटर्न्स दिखेंगे. अगर आप कोई ऐसा स्टॉक का एग्जांपल लेते हो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, तो फिर आपको एडिक्वेट पैटर्न्स दिखेंगे नहीं शायद. ओके, सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर थ्री ग्रीन कैंडल्स. ओके, और इसके बाद में यू कैन सी दैट देयर वाज अ प्रॉपर कंटिन्यूएशन आफ्टर दैट. तो ये तीन कैंडल तो ग्रीन हो गए. अभी किसी को लग सकता है कि अरे अभी इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा, शायद नीचे जाएगा. बट वैसा नहीं है, उल्टा है. तीन ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बन गए तो उसके बाद में आप फर्दर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दिस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थ्री सोल्जर्स. देयर आर थ्री क्रोज. उसका भी एग्जांपल देखते हैं. सो हियर वन टू थ्री. ओके, कंटिन्यूअसली थ्री रेड कैंडल्स है. तो अगेन नॉर्मल आदमी को लगेगा कि अभी ये इतना 3 दिन गिरा है, इतना बड़ा रेड कैंडल्स हुआ है, तो शायद प्राइस ऊपर जाएगा. बट नो, द एक्चुअल पैटर्न इज इंडिकेटिंग दैट द फर्दर फॉल इज एक्सपेक्टेड, एंड एज एक्सपेक्टेड एंड एज पर द पैटर्न यहाँ पे और आगे फॉल आया हुआ है. ओके, so some of the important bullish candles to know. As I said, bullish engulfing is the most bullish candle. Then this is a bullish hammer, second most bullish. Then there is normal bullish, neutral bullish. So this is a neutral candle, but since it is green, you can call it as a still a bullish candle. And then there is least bullish. Okay, now this is actually a bearish candle. So it is, but since it is green, so technically you can call it as a least bullish candle. So ideally ये न्यूट्रल बुलिश और लीस्ट बुलिश में आपको एक्शन कुछ लेना नहीं है. 1 2 and 3 यहाँ पे आप बाय करके होल्ड कर सकते हो. सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल्स. एनी क्वेश्चंस हियर नाउ? एवरीबॉडी विथ मी?
Is it okay, the information that I am sharing, is it quite basic or advanced? आपके लिए ये थोड़ा ओवरडोज हो रहा है या नॉर्मल है? There is a question, are these candles form basis sale and is it future prediction based on past? Yeah, definitely. So the candles are formed as per the previous buy and sell transactions. Okay. I mean, whatever the candle is getting formed, it is a price action, and price action is nothing but the previous buy and sell transactions. And the patterns indicate the future as to what you can expect in the upcoming days or upcoming weeks. Depends on the time frame. Okay. Now, one point here I want to cover is time frame. Now, if you can see here, you can see candles right from 1 second. There is a question, does it include both cash and FnO? Yes. So see, whatever we are discussing, the concepts that we are discussing are applicable for stocks, delivery, FnO, commodity trading. So any type of trading that you are doing, I'm taking example of TCS just for the sake of example, but this is applicable for Nifty, Bank Nifty, FnO trading, commodity trading, you name it. The same patterns is followed everywhere. The same interpretation is to be used in all the asset classes. So I was coming to time frame. Okay. Now there are various time frames available for study and for analysis. So you have time frame right from 1 minute or rather 1 second all the way up to 1 year. Okay, you can have one candle of 12 months. So right from the IPO of TCS, which was in January 2004. Okay, the price opening price was 149. Okay, today the price is, let's say, 4,200. So from 149, the price goes to gone up to 4,200. So this is a 1 year candle. Okay, what has happened in a year? Now, if you see for the first year, it was almost flat. लोगों को लगा होगा कि यार ये कंपनी कुछ नहीं करेगा. Are the charts different for cash and FnO? There is a different question here. See, for the cash segment, the chart is obviously there in front of us. Now, if you are doing options of TCS, you refer to the same chart. If you are doing futures of TCS, you refer to the same chart. Now, there is a little complex level further. If you want to check the charts of futures of TCS and charts of options of TCS, that is also possible. But that's the next level. It's a little complicated for today's discussion. But at a higher level, net, this is the chart you can refer to for both cash and FnO. I hope I clarified your doubt. Okay, let me come back to the candlesticks again. So various type of time frame again. So various time frames are available as per your trading style, as I said. So this is a one candle of 1 year. If you want to have a really long-term horizon for a particular stock. Okay, now just to give you an idea, it consolidated between this price 3,700 and let's say 3,300. So 3,300 to 3,700 it consolidated. Now it is very less chance that the price will go below 3,700 from here. अगर 3,700 के आसपास ये प्राइस जाता है तो इट्स अ बाय एंड डेफिनेटली यू विल सी सम गुड रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर्स. और इसका ऊपर का जो ट्रैजेक्टरी है, लुकिंग एट द पास्ट पैटर्न्स, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल गो टुवर्ड्स 5,500 or 6,000 in next 1 or 2 years. Okay, now this idea or these levels I can interpret based upon the previous candles. पहले के जो कैंडल फॉर्म हुए हैं उनसे हमको ये आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि इसका जो प्राइस है, व्हाट प्राइस वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यूचर. सो दैट इज व्हाई यू कैन, अगर आपका होराइजन 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो आप ये बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल स्टडी करो. अगर आपका होराइजन लेट से 2-3 महीने का है, ओके, यू आर ट्रेडिंग एंड यू आर टेकिंग अ पोजिशन फॉर 2-3 months, तो फिर आप डेली कैंडल यूज करो. So you can see here right from 1 year candle we are coming to 1 day candle.
तो हियर यू कैन सी, अगर आपका डेली टाइम फ्रेम का होराइजन है तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस डेली कैंडल्स एंड यू कैन हैव अ रेंज ऑफ 3600 टू 4500 और 4700। तो जैसे आपका टाइम फ्रेम चेंज होता है, आपका टाइम होराइजन चेंज होता है, वैसे आपका रेंज भी चेंज होता है। ओके, अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है तो उसका रेंज रहेगा 3600 टू 4600। कोई अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, योर रेंज विल बी ऑल द वे फ्रॉम 2800 टू अपर रेंज भी आपको पकड़ना है विच इज 6000। सो यू कैन ट्रेड राइट फ्रॉम 2800 टू 6000। तो वो डिफरेंस होता है टाइम फ्रेम का। इफ यू आर डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शन, इफ यू आर डूइंग समथिंग शॉर्ट टर्म, तो इवन यू कैन लुक एट 1 मिनट कैंडल्स ऑल्सो। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म पोजीशन है, 2-3 दिन का पोजीशन है, 4-5 दिन का पोजीशन है, then you can do look at using the 1 minute candle, 5 minutes candle. Okay, so I clearly told you about the candlestick patterns and time frame. इसमें और भी पैटर्न्स होते हैं, पीपल कैन यूज अदर डिफरेंट पैटर्न्स ऑल्सो, बट फॉर द सिंप्लिसिटी सेक आई एम स्टिकिंग टू कैंडल्स। यू कैन ऑल्सो स्टडी लाइन। ओके, ये लाइन में आपको काफी स्मूथ एंड इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हेन आई से स्मूथ एंड इंफॉर्मेशन, नॉइज इसमें कम होता है, यू गेट अ गुड लेवल्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। देयर इज एरिया ऑल्सो विच यू कैन यूज, उसका भी एक अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। बट फॉर द बिगिनर्स यू कैन जस्ट फोकस अपॉन दी कैंडल्स। So we discussed about this bullish candlestick pattern, bearish candlestick pattern. So there is a combination of pattern, combination of candles, which can also give you some indication about the upcoming move. So let us look at that. So whenever this type of 2-3 consolidation candle forms, I'm talking about 10th October. So this is 5 minutes. Okay, let us go to 1 day. Okay, so 29 February, 1st March, 2nd March. यहाँ पे ज्यादा कुछ प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ है, सो दिस इंडिकेट्स अ कंसोलिडेशन पैटर्न। अभी ये नॉर्मली कंसोलिडेशन बहुत दिन नहीं चलता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद में ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, इधर वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। नाउ सिंस दिस इज रेड एंड दिस वाज आफ्टर अ रैली, तो अगर ये 3 दिन रेड कैंडल्स यहाँ पे पेंट कर रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल गो डाउन इन द नेक्स्ट मूव्स। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट एंड डू अ prediction for the future prices. So this is a combination of 2 or 3 candles. I'm not talking about one single candle in isolation. Similarly, आप यहाँ पे देखिए कि ये 1 2 3 कैंडल्स कंसोलिडेशन हुआ है 29 जनवरी, 30th जनवरी एंड 31st जनवरी। अब ये कंसोलिडेशन हुआ है आफ्टर अ फॉल। आफ्टर अ फॉल जब कंसोलिडेशन हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली एंड ऑन द एक्सपेक्टेड नोट्स देयर वाज अ रैली हियर। अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं, अगेन देयर वाज अ कंसोलिडेशन, 1 2 3 4 candles, there was a consolidation and then there was a sharp fall. And in all probability, this fall can continue further. Okay, because the TCS result was declared and the result was not good. I always say the news comes on the chart first. Okay, इसका मतलब क्या है कि लोगों को लगता है कि न्यूज आने के बाद में चार्ट में मूवमेंट होती है, बट एक्चुअली जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या लार्ज प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, दे हैव सम काइंड ऑफ इनसाइड इन्फॉर्मेशन और इनसाइड्स की इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, अभी रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, इनको शायद ऑलरेडी पता होगा। तो उसके वजह से ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस ऊपर गया नहीं है, एंड देन आफ्टर द रिजल्ट प्राइस कंप्लीटली वेंट डाउन। तो ये देख के हमको अगर आप एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये प्राइस यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। ओके, सिमिलरली
यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था अराउंड 7 अगस्त एंड ऑल, इसके बाद में देखिए प्राइस एक कंप्लीटली ऊपर गया। अभी ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि यूएस में रेट कट का मोमेंट चालू हो गया। रेट कट्स आर टिपिकली बुलिश फॉर आईटी इंडस्ट्री। तो रेट कट का पॉसिबिलिटी आने की वजह से बिफोर इवन द रेट कट वाज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया। सो दैट इज हाउ द न्यूज कम्स ऑन द चार्ट फर्स्ट। तो चार्ट पे आपको पहले न्यूज पता चल जाता है। आपको न्यूज देख के स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चार्ट्स का अगर आपको मास्टरी है, इफ यू हैव मास्टर्ड द चार्ट्स, you don't have to look at the news and anything, and you can take your investment decisions. So that is the beauty and power of technical analysis. Okay, now we'll talk about few other concepts. I told you that we'll discuss about trends, how to identify uptrend, how to identify downtrend, sideways range bound. Okay, then how to identify support resistance levels, how to draw the trend lines and how to use them, and then channels. This is another an interesting and important technical analysis pattern. So let's look at the uptrend first. So to identify a trend, there is a concept called as trend lines in technical analysis. Okay. So what is a trend line? You basically plot a line using the points. Now we are doing a upper ascending trend line. So for ascending trend line, you look at the heights. Now this was a lowest point here. Now what was the next higher lowest point? Okay. Now this was the next higher lowest point. So using these 2 points, we have plotted a trend line using just 2 points. Okay. Technically, there are multiple points here, 1, 2, 3, 4. Okay. Now, it is not a coincidence that this price stopped here. Okay. This trend line started here, and as per this trend line, there was a support here. Support यानी जहाँ से price नीचे जाना expected नहीं होता है. So there was a good support here, and that's the reason you could see a bounce in price from this particular level. Similarly, if trend line यहाँ पे ऐसा extend हो रहा है, and around 3775 or let's say 3800, यहाँ पे support आएगा. Okay, you can mark this level, and whenever there is a fall and it's already going down, so it is quite possible that the fall will stop around 3800. So a trend line on a daily basis gives you a very clear idea about where the fall will stop. Okay, now this is very useful and powerful concept. तो 3800 के आसपास आप आराम से बाय कर सकते हो, थोड़ा स्टॉप लॉस रख के. You can also see here that it can form a double bottom kind of pattern here. Okay. Similarly, we can draw upper trend line or ascending trend line. यहाँ से हम लोग ले सकते हैं. This will be a more accurate one. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 12 फरवरी का प्राइस है, ये 18 मार्च का प्राइस है. अभी ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी फॉर्म हो गया था. ओके. नाउ इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि प्राइस यहाँ पे रुक के वापस आया है, बिकॉज ये ऑलरेडी इधर रेजिस्टेंस था. ये रेजिस्टेंस था इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे आया है. अगर ये ट्रेंड लाइन अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको पता होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस आप नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके. Like for example, in our PMS portfolio management, we closed the positions for TCS or we sold most of the TCS holding around 4600, क्योंकि हमको पता था कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है. अभी कितना फॉल आएगा वो भी अपने सामने है. यू कैन एक्सपेक्ट इट टू स्टॉप, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो ऑल द वे अप टू 3800. 3800 के आसपास ये जाएगा
और वहां पे रुकना चाहिए, वहां से फिर से एक रैली दे सकते हैं। Okay, so this is how we draw the trend lines, and trend lines give us the idea of support resistance. अभी इसमें और एक पॉइंट होता है कि ट्रेंड चेंज कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, एक अपर ट्रेंड चल रहा है, लोअर ट्रेंड चल रहा है, हाउ व्हेन डू यू से अपर ट्रेंड इज कन्वर्टिंग इनटू अ लोअर ट्रेंड और अ बुलिश ट्रेंड इज कन्वर्टिंग इनटू अ बेरिश ट्रेंड। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप ट्रेंड लाइंस का यूज कर सकते हो। ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ओके, अभी ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है, ये एक लो यहाँ पे बना, इसके बाद में हायर लो बना, यानी ये लो है बट इट इज अ हायर कंपेयर टू द प्रीवियस लो। सिमिलरली दिस इज अ हायर लो कंपेयर टू द प्रीवियस लो। जब जब हायर लोज बन रहे हैं तब तब आपका ट्रेंड जो है वो अपर ट्रेंड चल रहा है। और जिस दिन आपका लोअर लोअर हाई बनता है या लोअर लो बनता है, तो वहां से आप पकड़ लो कि आपका लोअर ट्रेंड चालू हो गया, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। और जो लोज है अभी, इसका इसके पहले का लो था ये 4441, उसके बाद में इसने लो बनाया 4355, यानी ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। somebody was asking me a question कि अप ट्रेंड लो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड में थोड़ा जब इसने यहाँ पे लोअर लो बना लिया तो आपका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। एक बार डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो स्टॉक में से निकल लो, टिल द टाइम उसका रिवर्सल नहीं होता है उस स्टॉक में आपको वेट करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। बहुत बार गलती लोग ये करते हैं कि और कितना नीचे जाएगा चलो बाय कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत लोगों ने यहाँ पे 4200 के आसपास बाय किया होगा, बट आइडियली आपका जो बाय लेवल होगा दैट विल बी अराउंड 3800। ओके, अभी अब फ्री सेशन चल रहा है अपना, आप 3800 पे टीसीएस बाय करना, आपको 5 to 10% इजीली प्रॉफिट हो जाएगा, आपका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है कवर हो जाएगा। सो आर यू क्लियर अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूजिंग द सिंपल टेक्निकल एनालिसिस यू कैन डू दैट, और ये जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे करोगे उतना ये रिलायबल है, क्योंकि रिलायबल यानी एवरीथिंग दैट एट द एंड ऑफ द डे इज अ प्रोबेबिलिटी। तो जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे प्लॉटिंग करोगे उतना आपके एनालिसिस का प्रोबेबिलिटी बेटर रहता है। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो भी आप सिंपल वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट अस रिमूव द ट्रेंड लाइंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडियली आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद वीकली टाइम फ्रेम। कि जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है नॉर्मली दैट इज कॉल्ड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। नाउ दिस इज ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस लेवल फॉर हायर टाइम फ्रेम। अब जो सपोर्ट लेवल जो है, ये पहले का जो रेजिस्टेंस था ना, दिस वाज अ, जैसे अभी ये रेजिस्टेंस है, सिमिलरली दिस वाज द अर्लियर रेजिस्टेंस लेवल, सो दिस वाज द सपोर्ट लेवल नाउ। तो जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस बनता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बनता है। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है। अभी ये रेजिस्टेंस है, मे बी इन फ्यूचर इट विल बिकम अ सपोर्ट। तो पहले का जो हाई होता है उसको हम लोग नॉर्मली सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये 3862, आई ऑलरेडी टोल्ड यू यूजिंग ट्रेंड लाइंस ऑल्सो, कि 3800 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो, एंड इट इज बीइंग वैलिडेटेड यूजिंग द सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ऑल्सो। 3810 3812 जो यहाँ पे दिख रहा है, तो रफली अराउंड 3800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन रहे हैं। So by just plotting these support lines and resistance lines, you can manage the support resistance level. देखिए पास्ट में भी ये लेवल जो है, it has acted as a strong support zone. You can validate in past also.
अगर आपको और नीचे जाना है, 3650 और एक सपोर्ट एरिया बनता है। तो 3800 मोस्टली तो ब्रेक नहीं होगा अनलेस देर इज सम बिग मेजर इशू इन द मार्केट। अदरवाइज 3650 to 3800 ये रेंज में काफी ये टीसीएस का कंसोलिडेशन भी होगा। इमीडिएटली प्राइस नहीं बढ़ेगा, देयर विल बी कंसोलिडेशन इन दिस एरिया। कंसोलिडेशन का मतलब उस जोन में प्राइस रुकेगा फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंसोलिडेशन। So this is about support and resistance. We already spoke about trend lines. I told you how to identify a downtrend and uptrend. And then there is another beautiful pattern called as channels. Let us take a look at it. Everybody clear with this support and resistance concept? अभी channels जो है, channel is a combination of trend lines. Okay, this is upper trend line and this is a lower trend line. Now this is the channel also. This pattern is also called as a wedge. Okay, ascending wedge. Ascending यानी ऊपर की तरफ जा रहा है वो wedge, इसलिए उसको ascending बोलते हैं। तो दिस इज अ बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न का मतलब क्या है कि ये ascending जो है ये यहाँ पे आके ब्रेक हो सकता है। ओके, आई टोल्ड यू दैट 3800 इज अ सपोर्ट जोन, डेफिनेटली इट्स अ सपोर्ट जोन, और वहां से आप एक 5% 10% अप मूव देख सकते हो। बट इवेंचुअली अगर ये पैटर्न अगर आप देखते हो एज पर दिस पर्टिकुलर पैटर्न, 3700 ब्रेक होके इसका प्राइस काफी नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है? ये वेज का जो हाइट है, ये वेज का जो हाइट है इट इज 4600 3700। ओके, सो अराउंड 700 पॉइंट्स का इसका हाइट है इस वेज का। सो अराउंड 700 पॉइंट्स यानी अराउंड 3000 तक इसका प्राइस नीचे जा सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो। सो यू कैन सी दैट 3000 इज अ another support area for TCS. So this is a ascending channel wedge pattern, and ascending channel or ascending wedge, this is normally a bearish pattern और यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अभी हर बार होगा क्या? नॉट नेसेसरी। अगर हम पास्ट में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एक थोड़ा ascending पैटर्न बना था, बट वो ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट दिया। अब आई मेंशन्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकआउट, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, अभी ये एक पैटर्न यहाँ पे बना था फ्रॉम 22nd February 2020 और ऑल द वे अप टू फरवरी से लेके तो जुलाई तक 6-7 महीने यहाँ पे पैटर्न बना। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया, ये 9 अगस्त 2021 का वीक है जब ये प्राइस इस लाइन के ऊपर बंद हुआ। ओके, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट हियर। मैं बहुत बार अपने ग्रुप में मैसेज डालता हुआ, हमारा जो आरजेएस अल्फा ग्रुप है, आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट देयर इज अ ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, देयर इज अ ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड। तो जब ऐसा प्राइस पैटर्न फॉर्म होता है तो आई कम टू नो दैट ओके देयर इज अ ब्रेकआउट व्हिच इज एक्सपेक्टेड, और वहां से आपको इन क्विक टाइम यू विल सी अ गुड रैली। ओके, तो ये 3400 से ऑल द वे अप टू 3900 तक गया है, ऑलमोस्ट 15% प्रॉफिट हुआ विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेकआउट्स। ओके, so for that you have to track these channels. You have to first of all make the draw the patterns on the chart, and then you have to track it, or you can have some alerts also for that. चैनल्स का और एक ब्यूटी होता है कि इट विल आल्सो गिव यू अ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर इनकेस ये यहाँ से फिर से अगर रिवर्स लेता है एंड मार्केट टीसीएस बिकम्स बुलिश अगेन, तो क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो अराउंड 4650 या लेट्स से अराउंड 4700 तक ये प्राइस जा सकता है। सो दिस इज
Another advantage of channels, what information you can get for the future prices. Okay, so this is very important. इतना भी अगर आप कवर करते हो और फॉलो करते हो तो यू कैन बेसिकली मेक सम डिसेंट प्रॉफिट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग वर्क इन कैश सेगमेंट और डिलीवरी सेगमेंट. Then there are these important chat patterns. ये सब पैटर्न्स हम यहाँ पे बेसिक सेशन में कवर करना इट विल बी लिटिल ओवरडस्ट, सो basically this is part of the advanced session that we'll be doing. So there are very important and very predictable patterns. So head and shoulders, cup and handle, double top, double bottom, quite interesting and useful pattern, but it will be little complicated for you to understand in the basic session. There are reversal chat patterns. Chat patterns also give you an idea about a reversal in a particular trend. There are continuation patterns. Okay. Some technical indicators I want to cover. Some basic technical indicators so that when you go for the advanced session, आपको advanced session में जो concepts हम explain करेंगे उसका आपको clarity आएगा. So there are various dozens and hundreds of indicators available. I will give you a flavor of that. Basic indicator called as moving average. Moving average simple. Okay. अभी आपको अगर एक सिंपल तरीके से ट्रेंड ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो दिस मूविंग एवरेजेस विल हेल्प यू टू डू दैट. अब ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज 9. इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल है 5 मिनट्स का, अगर आप 5 मिनट्स के 9 कैंडल्स का प्राइस अगर निकालोगे एवरेज प्राइस, so that is what this particular indicator indicates. 4146 is the simple moving average price for last 9 candles of 5 minutes. तो एक सिंपल एकदम बेसिक अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो जब तक आपका प्राइस ये 9 मिनट्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपका ट्रेंड बुलिश चल रहा है. जब तक ये प्राइस इसके नीचे है तब तक आपका ट्रेंड बेरिश चल रहा है. आई मीन वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन यू कैन टेक. You can go on higher time frames. ओके, तो देखिए इसके नीचे प्राइस आ गया तो ये नीचे नीचे जा रहा है. यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से कंटिन्यूएशन इसका चल ही रहा है. तो इसी चीज को अगर आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाना है और इफ यू वांट इट टू मोर accurate, then you can use a combination of moving averages. So you can have one more moving average. So for the indicators also one can change time frame. Okay, now this is 9 minute. So you can go to settings and change the time frame. Let's say you go to 21. Okay, आप इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हो टू मेक इट easier for you to understand. Let's say we make it blue or yellow. Okay. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव यूज्ड टू इंडिकेटर्स, वन इज 9 मिनट, वन इज 21 मिनट्स. ओके, एंड देन यू कैन यूज इट ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. तो अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर यूज कर रहे हो, लेट्स से यू आर यूजिंग ओनली 9 मिनट, तो आपका
डिसीजन जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा. लॉट ऑफ टाइम्स देयर विल बी फॉल्स ट्रिगर्स. यानी बहुत बार लगेगा कि अरे प्राइस ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे आएगा. या लगेगा कि अरे प्राइस नीचे जा रहा है, बट वो नीचे जाने के बाद में ऊपर आ रहा है. यानी यू माइट गेट कंफ्यूज और यू माइट गेट ट्रैप्ड. ओके, तो अगर आपको और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेना है, अगर एक्यूरेट डिसीजन लेना है, then you can go for a combination. And how to use that combination? You look for a cross. Okay, cross का मतलब क्या होता है? There will be a bearish cross and there will be a bullish cross. अगर ये आपका 9 मिनट का जो इंडिकेटर है, अगर ये 21 मिनट के इंडिकेटर के नीचे आ रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेरिश क्रॉस हो गया. और ये बेरिश क्रॉस अगर हो गया तो इसका मतलब है कि देर इज स्ट्रॉन्ग बेरिश कंटिन्यूएशन. तो जब तक ये प्रॉपरली फिर से उल्टा नहीं होता है, बुलिश नहीं होता है, मैंने ऐसे बुलिश, आपका ये ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक आपको ये स्टॉक को बाय नहीं करना है. ओके, नाउ दिस वी आर लुकिंग ऑन 5 मिनट्स. अगर आप इसको और हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हो, लेट्स से यू गो टू 15 मिनट्स. ओके, देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स पे जब क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, बट इट वॉज नॉट वेरी पावरफुल. बट यहाँ पे जो हुआ उसके बाद में काफी स्ट्रांग फॉल आया है. अब जितना ज्यादा टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको एक्यूरेसी बढ़ेगा. इफ यू गो टू 30 मिनट्स, अब यहाँ पे क्या है कि 30 मिनट्स में एक बार बुलिश क्रॉस हो गया तो आसानी से बेरिश क्रॉस नहीं हो रहा है. ओके, वैसे अगर आप 5 मिनट्स देखते हो तो वो बुल बेयर चालू रहेगा. सो हियर यू कैन सी द क्रॉसओवर्स आर हैपनिंग फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंट क्रॉसओवर्स विल कंफ्यूज यू. सो इफ यू डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, देन गो फॉर द हायर टाइम फ्रेम. अगर आप 1 आवर का देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हियर देखिए, यहाँ पे 1 आवर पे इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया, तो फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट रिमेन बुलिश. तो जितना आप हायर टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना आपके लिए कन्फ्यूजन कम होगा, उतना आपका डिसीजन जो है वो राइट जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द इंडिकेटर्स. तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं. देर आर वेरियस इंडिकेटर्स अवेलेबल. देर आर लीड इंडिकेटर्स, देर आर लैग इंडिकेटर्स. तो ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम लोग एडवांस ट्रेनिंग में कवर करते हैं. सो these are some of the websites that you can use. We have already used TradingView. There is investing.com, which is another good website for traders and investors. Money Control has got a lot of information. Then there is a website called as Obstrad or Define Edge. Now, this website is for especially for FnO traders. If you are doing future and options trading, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बहुत सारा डेटा मिलता है. हाउ टू यूज दैट इन डिटेल, वो इन डेप्थ हम एडवांस ट्रेडिंग में कवर करते हैं. ओके, similarly there is this website concept, again very useful. So mostly I have covered concepts that I wanted to basically inform you about in this basic session. ये आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स यहाँ पे कवर होता है. Using this information you can look at doing advanced technical analysis. One information I want to share, this is RCS Alpha. It's a free WhatsApp group that we run. यहाँ पे हम लोग फ्री ट्रेड्स, मार्केट अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं. अगर ये ग्रुप आप सिर्फ फॉलो करते हो ज्वाइन करके, तो ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करके भी आप you can get a lot of profits. Okay, so quite useful. You will be having learning also and you will be having earning also. So some of you are already part of it. If you are not, you can just scan this QR code and join the group. You are more than welcome to join it. So that's it from my side. From the contents point of view, if there are any questions, I am more than happy to take the questions. You can put the questions in the chat box. If anybody wants to speak, you can unmute yourself and you can ask the question also. Since our session is mostly done, I mean the information is mostly done. So there's a question on the advanced training. So advanced training is on 20th October in Pune. It is an in-person training. Fees is only 1500. 1500 is hardly any fees, but the time and energy you have to invest. So if you are serious, you can do that. Are there any advanced online sessions available? Yes, online advanced sessions also are there. So we schedule online sessions also. The upcoming one is offline. Maybe after that, we will have an online session. Just as what we are doing today, it's a basic session. So we will also have an advanced
online session for technical analysis and derivative trading. There is a question, sir, I want to know about cup and handle pattern. Sir, cup and handle is a little complicated pattern. अभी ये basic session में cup and handle cover करना will be little complicated or overdose for a lot of people. So cup and handle will be covered in the advanced technical analysis session training. Can we use all these concepts for commodity trading? Yes. See, technical analysis concepts are similar for any kind of asset class. Only thing is that that asset class should have a good volume और उसका अच्छे track record होना चाहिए. When I say track record, you should have the charts available for at least 5 years, 10 years. अगर 5 साल 10 साल का आपके पास में charts है तो you can use it for any stock, any index, Nifty, Bank Nifty, future and options, commodity, even cryptocurrency for that matter you can use. So the concepts are similar for any kind of asset class.